Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. हम अल्लाह के पाक नाम से इस आज के सेशन का आगाज़ करते हैं. Today we are having the Coffee with CEO session. The Coffee with CEO session is basically the program is all about inspiration, and we invite a CEO of a successful companies, and we'll ask the questions regarding the success about the company and the person's life, just for inspiration for the young leaders, young new CEOs. And this is an initiative of basically of the CEO Club Pakistan and the Management House. It's a state-of-the-art leadership development institute. तो सबसे पहले हम आज का जो गेस्ट है उनका आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ. वो जवाद कुरैशी हैं. Jawad Qureshi, am I right? Absolutely. Jawad Qureshi is a very dynamic, very vibrant entrepreneur. इनसे काफ़ी साल पहले मुलाकात हुई थी. तो उस वक्त उन्होंने इनका एक ब्रांड था KKT के नाम से, जो कि ये जो स्पेशली जो लोग जिनको कमर में और स्पाइनल्स में पेन आती हैं या उनको और बड़े मसले मसाइल, तो उसको उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया और ये जो वेंचर था इट वाज वेरी सक्सेसफुल. लेटेस्ट जवाद कुरैशी ने एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है 3D लाइफस्टाइल के हवाले से. अब ये हमने 3D को किसी और एंगल से देखा था, हमने 3D मूवीज़ और 3D डिजिटल प्रिंटिंग देखी. अब ये 3D लाइफस्टाइल क्या है ये हम जवाद साहब से आज पूछते हैं. और अस्सलाम वालेकुम जवाद. जी वालेकुम सलाम. जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेसिंग द मैनेजमेंट हाउस. माय प्लेजर जी. आपको मैनेजमेंट हाउस कैसा लगा? आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल स्ट्रक्चर. आई थिंक स्ट्रक्चर के अलावा इट्स पीपल दैट मेक अ डिफरेंस. आपकी काविशें थी. आई रिमेंबर मीटिंग यू अ फ्यू इयर्स बैक और उसमें आई नो आई वाज पार्ट ऑफ दिस एंड यू नो वी वर helping mature your idea of putting something together which can help society or give back to society in a way where you're able to produce not just human capital and professional development, but at the same time you were able to facilitate those and provide a landscape and a platform where people can come in and get trained as well as utilize services, at a level which matches us to the West today, actually. Yes. So I want to congratulate you. My first time here, I'm thrilled and pleased. Great job. If I had an audience, I'd be clapping my hands for you, actually. You know. तो नहीं ये हमारी ऑडियंस ये बहुत बड़े बच्चे हमारे. जवाद, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम. आप आए मैनेजमेंट हाउस और you appreciated the idea of management house. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जस्ट शेयर विद आवर ऑडियंस एंड जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं, जरा अपने बारे में बताइएगा कि फ्रॉम वेयर इट इज आर स्टार्टेड. आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ में आपने देना, डोंट गो इनटू मोर डिटेल्स. मुख्तसर आपने बताना है कि आपने अपना लाइफ कहाँ से शुरू की, आपकी तालीम, और उसके बाद क्या चैलेंजेस फेस किए आपने यहाँ तक पहुँचने में. यू एंडेड अप CEO of a number of ventures and companies. Actually, it was like every Pakistani. I went to school in Lahore. I was born in Lahore, of course, to a Pakistani father. My mother was from Canada, actually. So I have a mixed origin. But then, of course, she converted to Islam in my training. And God bless her. You know, she's a role model for me in many ways. But after I'd finished my schooling here, I went abroad. I went to Montreal first, and then I did my CJEP, which is college there. And then I went, I went to New York. I did my bachelor's there. And from there onwards, I always had an interest in the global stock markets. Wall Street was a big passion of mine. I was able to learn all my skill sets by some of the top institutes of the world, and from corporate finance, corporate restructuring, capital formation. These were my key strengths. And, life moved on till I actually I got married and I moved to Vancouver, Canada. From there, I joined BMW and I was Director Sales and Marketing for BMW for a number of years
till I became a victim of back pain. At that point, KKT came in the picture for me. Of course, today I walk normally. I was limping my life away, and Alhamdulillah, after trying everything else on the planet, I underwent a KKT treatment, and Lord behold, I was able to get my optimal life back. And I was in excruciating pains. I was living a debilitating life. And today, Alhamdulillah, I'm very normal. And when I understood what it did for me, as a son to this soil, I wanted to come back and do something for the people of Pakistan. And the spirit was such that it brought me not just to give back to society, but on record, we've done over 125,000 KKT treatments to date. So the journey started there from when I did what I call a reverse migration, and I think at some point we love to do a topic just on reverse migration actually, because I can see a lot of that happening in the coming few years in Pakistan, whereas settled Pakistanis will be coming back to Pakistan. But going back to my story, it started in 2012 from Lahore, and then we expanded to Islamabad, Karachi, and in a few years we were in Multan, Faisalabad, Peshawar, we're everywhere in Pakistan. These are state-of-the-art centers that practice non-surgical treatment of various diseases associated with the human spine. जो मोहरे हैं and the discs हैं, उससे जो भी spinal column में diseases associated हैं, हम sound waves के ज़रिए where we've cured thousands of Pakistanis to date. पिछले एक साल से we had an amazing team at KKT. Dr. Numan happened to be the new person heading the team there actually as well. So it gave me some free time, and I was always thinking, KC vertical ke andar I would do something else and expand. So what we've introduced in Pakistan now, and this started in December of last year, we brought 3D lipo, which is a एक मिनट जरा मैं यहाँ रोक रहा हूँ जवाब थोड़ा सा before jumping to the 3D what is all about. ये जो आपने जो पहले अभी जर्नी शेयर किया, your mother from Canada and you brought up in Lahore and then आपने ये एजुकेशन बाहर से हासिल किया, मुझे ये बताएं कि सारे सफर में what challenges being an entrepreneur, जब आप इस वेंचर अपने KKT की तरफ आए तो कोई एक इनिशियल जो स्टार्टअप होता है वो एक आइडिया उसके पास होता है, उसको आइडिया को मटेरियलाइज करता है, उस आइडिया को मटेरियलाइज करने के लिए what kind of the challenges you faced? I went through a lot and how did you overcome? I went through a lot of learning. I shouldn't say that my challenges. I wasn't a born entrepreneur. Okay, you cannot put me in a bucket of people which say कि नहीं यार ये पैदा ही ऐसे हुए थे, मैं ऐसा नहीं था, और I don't think ऐसे होते हैं, quite frankly, but I could be wrong here. I believe कि I was very professionally groomed. I had this amazing passion of learning. Okay, I wanted to learn everything. If I could read 1,000 books in a day, I would read 1,000 books in a day. Knowledge became ultimate power actually. And then when you became professionally groomed, and then you entered professional life where you were to deliver from your work ethics, especially in a very corporate-oriented circle, it gave you an opportunity to perform. And as I started performing, I started climbing up the ladder. And as I started climbing up the ladder, I realized I can cover pretty much everything as a business person, from the very basics of what is required to the executive management side. And once you've gone through the entire chain, it's like a different kind of a food chain. Once you've gone through the entire chain, I think you at that point need to make a mental switch that either you want to work or work for somebody else, maybe putting it in a harsh way, or you actually want to do something of your own. Now, you can do something of your own in two different ways. You can acquire a McDonald's and have a business of your own, or you can one day say, okay, well, maybe I can make my own burgers.
And that's where the entrepreneurial spirit wakes up inside you. And I think that's when I realized, especially through my illness, I went through a very excruciating phase of my life when I was a victim of back pain, which wouldn't go away, and surgery was my only option, and I was very scared from the research that I've done. So I wanted to do something non-surgical, and with sound waves, KKT was going through clinical trials at that time, and I signed up as a guinea pig. I was able to get relief. And that's where I made my entire business case to come back to Pakistan. And in essence, it killed two birds with one stone. The first one was, it was very beneficial for society. We made a difference in people, who are now living an optimal lifestyle. And then secondly, the money part was a byproduct of the ethical side of the business. So the challenges were very little, and more so in Pakistan than anywhere else. In Pakistan, it's how should I put this? हर कोई तंग कर रहा होता है आपको किसी न किसी तरह से था, and I think उससे भी चले आप used to हो जाते हैं. लेकिन finding good human capital was perhaps one of the biggest challenges that I had faced, because sometimes you hire somebody in that position, you expect them to know everything about that position. वो ठीक है, एक ट्रेनिंग फेज है, 2 हफ्ते का है, 3 महीने तक स्ट्रेच कर सकते हैं उसको. But then they are the masters in their domain. You hire the best people that are masters in their domain. An entrepreneur, should or could rather, be investing time in grooming people, but shouldn't be investing time in training them. Actually, it's a complete distraction to your vision and your long-term objective. Okay, thank you. Human capital जो है वो एक this is the challenge for in Pakistan for doing the business. Now my second question regarding the new venture. You started your initiative, the 3D lifestyle. Just enlighten us and over the people. What is our idea and what the scope? What the down the road you see the potential in this business? I can tell you this, Jasa, that every single person, is going to love 3D lifestyle. it's an inevitable love. Okay, so it's basically the biggest part of how I could explain the beauty vertical today. Okay, now 3D lifestyle is a technology from England which has taken England by storm. The technology is called 3D lipo. Of course, I call it lifestyle because I look at a bigger picture. But what 3D lipo in essence did was it revolutionized non-surgical beauty treatments. And I know everybody in this room and everybody that's going to be watching us today would love to look beautiful. Be it they want to shed their fat, be it they want to have a facelift, be it they don't want to have a double chin, be it they want an eyebrow lift. Today's male and today's female likes so many different things just to look beautiful, and they will go out of their way. A beauty is something which never fades away, it never goes away actually. एक कंघी भी अगर आप कहीं से खरीदते हैं ना, तो वो आप उससे अगर आप बाल comb करते हैं, तो you're combing it because you want to look beautiful actually. So I looked at the domain with a vision where I can actually. Pakistanis are overall a very gorgeous looking nation. It has one of the best mixtures. If you ever look at a 2,000-year-old history of this part of the land actually, so it has Pakistanis overall will stand out even if they were to put among 20 people. My goal is that we just enhance and make Pakistanis younger and slimmer. And we just offer non-surgical treatments for fat loss. So we do fat melting, sound waves के ज़रिए. हमारा claim to fame है कि we make you lose 1 inch in 45 minutes.
Okay. Non-surgically. And then This does mean there are no side effects. Zero, because it's sound waves basically. So ultrasonic waves, they actually break the fat cells. For a certain period of time. जी मैं आपको बताता हूँ. So it breaks the fat cells, and then you drink enough water that the fat cells go out of your body through your lymphatic system. Or the other way that we can do for stubborn fat, कब लोगों को double chin होती है, कुछ को love handles होते हैं. We do fat freezing. We freeze the fat at -6 degrees. And then over the course of 4 to 6 weeks, once again, the process through your lymphatic system goes out. Then we have our ever popular, very popular with the females. Okay? It's called the 3D HIFU facelift. I don't know if anybody's been following this here, but you girls are certainly about to follow this. What that does is, it does non-surgical facelifts. So you have a very clear jawline, it comes out, droopy eyes go away, there's no more wrinkles. I don't think you would need any more Botox and filler injections anymore. And it's a one-off treatment which makes you look younger, and you stay like that, years younger, and you stay like that for at least 2 years. Your next treatment will probably be 2 years out. But यहाँ पे सिर्फ हम रुकते नहीं हैं. We do skin tightening. We have NanoSure device, the world's best for pigmentation removal, birthmark removal, stretch mark removal, scar removal, tattoo removal. We have the world's best 3 frequencies के साथ. We're one of the only ones that has this. Our laser hair removal device. And it's one of the world's best gliding motion laser hair removal. So instant. Okay. And then we've gone into female health. So female empowerment is very big for us. In female health, we have gone into, my mother, she suffered from stress incontinence and urinary tract infection for a long time. The females, either go through hormonal changes, or they go through, especially after having kids, or they go through menopause. So they go through a certain phase in life where they're consistently facing embarrassing situations like stress incontinence. So we focused strictly in our clinics on female health. Now we started this journey in December, so December 2nd. 2017 is when we launched this. It's been exactly 6 months to date. In 6 months, we've started from one clinic, and today we have 22 of them. 22 clinics, and we're going to actually, probably by this time next year, touch the 100 mark. We were looking at, being the only structured aesthetics landscape within Pakistan. Thank you, Jawad, giving just a brief introduction of the 3D lifestyle. What is regarding the financial impact, especially the costing? Who is your audience? Who is the target people? Because beauty is not only limited only for the one top high-end or जो अमीर लोग हैं. Please enlighten us. Is it really accessible to the masses of the middle class and the lower middle class, and especially the people who have the deep pockets? It's accessible for everyone. Okay. I understand that majority of our nation's masses, are living a very hand-to-mouth life, basically. But my objective and goal is that we make it accessible to the common person. Okay. You do a lot of things, from maneuvering diet, starving, going to the gym, many things to lose fat. We make that person lose an inch in 45 minutes for a mere 18,000 rupees. So people have spent 50, 60, 80,000 rupees and have lost 4 to 5 inches. Okay. So
And I am hopeful that as we expand, our treatment service cost gets low. Give you another example of laser hair removal. Laser hair removal is something that girls love. Okay? And my pricing is amazing. Not just because I have the best technology in the world, but somebody who wants a laser hair removal done on a full body can pay 60, 70, 80,000 rupees, and they need to do it 3 times, 4 times a year. The facial part is maybe 10, 15,000 rupees. What we've done is we've actually given a membership card, which is 69,000 rupees for laser hair removal. Or you can pay 8625 in installments. And it gives you a 1-year membership of unlimited laser hair removal sessions. Okay? So what we've done is we've gone out and thought about the masses. Okay, this is something which we need to be focused on. So that the average Pakistani, maybe who sits on the back of a motorcycle, can also be one day willing to beautify themselves. Because it's their constitutional right, in my opinion, it's their constitutional right to make themselves appear and look good. It means you are in actually the 3D lifestyle, but I understand and I perceive this is a beauty business. It's one of the best verticals, aesthetics. It's called medical aesthetics. इसमें जो सबसे अच्छी चीज होने वाली है, और वो मैं आपको बता देता हूँ, वो अक्टूबर में होगी. We're actually going to be bringing fitness into this as well. Fitness mein, our brand is going to be launching here from England, and we will, under one roof, provide a complete lifestyle. Us lifestyle mein you will have the best treatment options, you will have the best diet and nutrition options, and then you will have the best fitness options. The fitness options may we can have crash courses, we can have boot camps. तो जो mixture होंगे Zumba, TRX, CrossFit, इस सब का एक mixture program होगा और various intensities के ऊपर रोज करवाए जाएंगे 6 से 8 सेशन हमारे हर क्लिनिक के अंदर. तो जब भी उस मोहल्ले के लोग अपनी ब्यूटी के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, वो भले फेस लिफ्ट कराना चाहें या फैट लॉस कराना चाहें या डाइट को मॉनिटर करना चाहें, so much so I might even look at solving the problem of somebody not having to go anywhere else, be it getting a treatment, be it getting proper gymming, be it getting proper diet, and maybe even in the future, who knows, even for simple grooming. We might put it under all in one roof and package it together so that it becomes the optimal lifestyle for a person who doesn't have much time, because family needs time, your boss needs time, your company needs time, your dean needs time. इसमें तो एक इसका भी इलाज है आपके पास. पाकिस्तान की जो नॉलेज है, स्पेशली एशियन साउथ एशियन जो नेशंस हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जी. वो है अपना ये फेयरनेस का, ये सफेद रंग का जी. तो इसका भी इलाज है कि हमको के पाकिस्तानी इस कॉम्प्लेक्स से निकलते ही नहीं है पाए. अब मैं आपको ये कह सकता हूँ, इसका भी है ये वैसे ही कॉम्प्लेक्स ही है सिंपल. देखें, अल्लाह ताला ने ना जिस तरह से लोगों को स्पेशली स्किन कलर के मुतालिक भी बयान हुआ है कि जी किसी गोरे को काले पे, अब मैं पूरा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन I think we should leave it as it is. I mean, I don't think ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं टच, मुझसे बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं जी वो फलाना डॉक्टर ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस दे रहे हैं जिससे हमारा रंग सफ़ेद हो जाएगा. अब उसके साइड ऑफ कोर्स मैं तो एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, KKT भी वैसा ही था, 3D लाइफस्टाइल भी वैसा ही है, तो मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ. I wouldn't touch anything कि जिसके कोई harmful effects हों basically. लेकिन I think कि जी अल्लाह ताला ने हमको जिस तरह से बनाया हुआ है, हम वैसे ही एक पता नहीं क्यों गोरा काला होना चाहता है या
ब्लॉन्ड्स जो हैं वो टैन होना चाहते हैं और और हम लोग गोरे होना चाहते हैं। मुझे वो पता क्या इंसानी सी फितरत है कि वो तो ग्रास ऑन द अदर साइड वो क्लियर ना जी हमें दूसरों की ज्यादा तो ये भी इंसानी है क्योंकि तालिब इल्म साइकोलॉजी का तो नफ्सियात के अंदर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर बंदे को अपनी बॉडी के बारे में अक्सरियत मेजॉरिटी को दे हैव अ नेगेटिव परसेप्शन पिक्चर ऑफ इमेज ऑफ योर ओन बॉडी ऑफ योर ओन सेल्फ तो उसमें अगर आप उसमें करेक्ट करते हैं हर बंदा कोई कहता है या अल्लाह मुझे थोड़ा सा लंबा बना देता है मेरी नाक से वीक हो जाती है मेरा रंग ये मेरे कलर बालों का ऐसे हो जाता है कमिंग टू द पॉइंट आपने बड़ा ऐसा पॉइंट बोला उसकी तरफ आऊंगा वो है फिटनेस जी एक हमारे पास ना अभी पिछले कुछ सालों से एक फिटनेस के ऊपर बहुत सारे 40 डे फिटनेस प्रोग्राम आ गया है जैसे ज़ुम्बा आ गया है बड़ी चीजें आ रही हैं व्हाट डू यू से अगर एक इस आज के इस इंटरव्यू के वाले से तो 3-4 आप अपनी नॉन सर्जिकल एंगल से फिटनेस के कुछ बताएंगे कि हाउ वी कैन स्टे हेल्थी क्योंकि हम लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल का विक्टिम हो गए अब ये जब से आईटी और मोबाइल फेसबुक लेके बैठे रहते घंटों बच्चे लेकिन जी आपको अपनी लाइफ को डिवाइड करना ठीक है सबसे पहले आपके अंदर और आपके बच्चों के अंदर यू मस्ट हैव अ बैलेंस एंड टीच देम अ बैलेंस बैलेंस शुरू होती है दीन और दुनिया को देखने से और दीन के लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं चाहिए होता आप नमाज अगर पढ़ते हैं और हमें 5 वक्त फ़र्ज की गई है हमारे ऊपर तो 5 मिनट में अगर आप एक नमाज पढ़ते हैं तो आप 30 मिनट्स आप अपनी दीन के लिए रिजर्व कर रहे हैं अब बाकी का जो टाइम है वो आपका अपना है बेसिकली अब उस टाइम में 2 चीज़ों का हक है एक आपका अपने ऊपर हक है बेसिकली और दूसरा आपका सोसाइटी पे हक है और मैं समटाइम्स ये फील करता हूँ अपने ऊपर के बाद से आपके बच्चे आपके माँ बाप आपके रिश्तेदार और दोस्त और मोहल्लेदार और जानने वाले ये सोसाइटी का हिस्सा है बेसिकली अब आपने बात की फिटनेस से तो देयर इज नथिंग लाइक अ फिट लाइक माइंडेड सोसाइटी और हमारा लॉन्ग टर्म विजन उसमें यही रहेगा कि वी हैव अ फिट लाइक माइंडेड सोसाइटी अब उसको अकम्प्लिश करना कोई आसान काम नहीं है एक्चुअली लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस दिन के बाद से मैंने आपने और हर किसी ने ये एक ही दफ़ा जीना इस दुनिया के अंदर बेसिकली ठीक है तो आपके पास एक ऑप्शन है और ये स्पेशली मेरी माँओं बहनों के लिए जो अब अभी इसको सुनेंगी कि होता यह है मैं देखा है पाकिस्तान में हमारे लेथार्जिक लाइफस्टाइल्स हैं और वी हैव अ टेरेबल डाइट हमारी डाइटरी इनटेक जो है ना इट्स प्रॉबेबली द वर्स्ट इन द वर्ल्ड ठीक है जितना ही से भरे फ्राइड चीज़ें पुराना तेल आई मीन नेम इट इट्स ऑल देयर फॉर अस नाउ फूड इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू हैव टू ईट बट एट द सेम टाइम आई कैन गारंटी यू कि फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट वर्क आउट देयर इज सम पार्ट ऑफ योर बॉडी अभी भी जिस पे आप बैठे हुए हैं या जिसको आप खड़े हुए हैं जिसने बड़े दिनों से मोशन नहीं किया हुआ तो यू नीड टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड देन यू विल इवेंचुअली लुक आफ्टर सोसाइटी टू लुक आफ्टर योरसेल्फ यू कैन डू सिंपल थिंग्स जस्ट गो फॉर अ वॉक टेक योर वाइफ फॉर अ वॉक go with your mother father kids whatever basically it starts there and we all have homes where we don't have to go very far कुछ लोग छत पे वॉक कर रहे हैं कुछ घर के इर्द गिर्द वॉक कर रहे हैं कुछ मोहल्ले में वॉक कर रहे हैं कुछ जिम जा रहे हैं कुछ लोगों ने कन्वीनियंस के लिए जिम घर बनाए हैं so what I would suggest is that you must take time out for your health पेट का बढ़ जाना is like a bomb ठीक है it will explode one day it will talk to you one day in forms of hypertension, high blood pressure, leading to cardiac diseases eventually, diabetes, just because एक symptom नजर आ रहा है यार वैसे तो मैं फिट लग रहा हूँ लेकिन मेरा पेट बढ़ा ये ना सोचिएगा कि वैसे ही पेट बढ़ा ये जरूर सोचिएगा कि ये बढ़ के कुछ करेगा जरूर ठीक है तो आपने इस पे अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ठीक है कुछ लोग जाते हैं दे गो टू अ पॉइंट
where they are stretching the truth. ये तो नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोलते हैं, लेकिन वो truth को stretch कर रहे होते हैं. आप अपने साथ, अपनी जिसामत के ऊपर, जो अल्लाह ताला की एक अमानत है, उसको stretch ना करें. Fitness एक ऐसी चीज है जो 70 years, मेरे वालिद साहब की 80 साल की एज है. He is extremely fit. He drives his car today himself. He's never missed his walk in 45 years, ever, rain or shine. Right? It's a commitment. You are committed to eat, you're committed to exploit yourself, to drink and eat, spend time with family and friends. But then you have to balance and think about your own life. And I will assure you of one thing, कि fitness एक ऐसी चीज है, देखें आपको अगर सोना पसंद है ना, तो उस आदत में कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे. जिस दिन आपको फिटनेस पसंद आ जाएगी, उस दिन मैं आपको अश्योर करता हूँ, you will actually start looking after yourself in every way. You will become healthier, smarter, and of course, more productive for society. Excellent. Fitness should be the goal. Yeah, absolutely. It's the new mantra of success. Yeah. Now coming to the other part of the questions. जी. जवाब, आपने इतनी जिंदगी की डाइवर्सिटी आपकी, जी. कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, जी. इस सारे सफर में जिंदगी में मुश्किल फैसले, क्योंकि सक्सेस जो होती है, इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ डिसीजंस. जी. आपने जिंदगी में 2-3 ऐसे मुश्किल फैसले, डिफिकल्ट डिसीजन, हार्ड डिसीजंस कौन से? I think coming back to Pakistan was probably one of them. Probably the most important, decision which changed a lot of my perspective about life. It also not just made me a more conscious and aware person, but it gave me an opportunity to look at people, the diversity of people, to travel, to understand the crux of what it would take to bring a change in society. I think life is all about changes. Okay? And changes only come when there are problems. So you face some problems and then you encounter changes after those problems. And then and things go smooth for a while till few new problems come up. And then to solve those new problems, you need to bring more changes in. So it's a cycle where you're just, you always have to adapt. And the successful ones, I believe, are those that usually go with the flow and adapt. So, Pakistan was an amazing journey for me, especially the first 2-3 years. Of course, I wasn't a doctor. I was promoting a orthopedic spine treatment. I had a lot of my friends, आज तो मेरे दोस्त हैं वो, लेकिन उस वक्त I had a lot of my friends who weren't very happy actually of us promoting a non-surgical treatment. Because in orthopedics, there's no such thing as an orthopedic physician. They're orthopedic surgeons, basically. And we were promoting stuff that was non-surgical. So I had a very uphill battle, actually, at that point. But Allah Ta'ala helped me through. And then I think, one of the other decisions that was quite challenging, or in a way, a very hard decision, was maybe not for me, but more so for my family, because they had lived, my kids were born abroad, they had lived abroad actually, and for them to come here and settle down here was an amazing journey. Light ja rahi hai, ye ho raha hai. It was just something they weren't accustomed to. So those were some of the most complex times that I think. Who's the inspiration, role model of Jawad?
I think a couple of my managers that I worked with, I should never forget. There's a gentleman by the name of Rich Spinelli that taught me a lot about management. There was somebody by the name of Joachim Newman, actually, who at BMW really guided me along. And then, of course, I should never forget my parents. I think my dad, to this day, is perhaps my sublime model, actually. I think, there's nobody who sacrificed more than my mother. There is nobody that, guided me in their own capacity as much, and even to this day, as my father. And then I think the best decision that I ever made was, at 17, when I left for abroad. वहाँ पे आपको ज़ाहिर बात है थोड़े से आपको life is not that easy there, और आपको अपने आप को ढूंढने के लिए you have to go through a lot of pain. कहते हैं no pain no gain, actually. So then you find yourself in some sort of a cycle out in the West. अब उस cycle को break करना भी और वापस आना भी was a lot. So in my 40 years, it's been I'm 40 by the way today. So it's been a great learning curve, actually, and I think I'm at a point today where I feel very contented. I think there is a lot to be done in this world now, and hopefully, this is my time to mentor and perhaps, invest in the new generation that's going to be coming up, so that we can. My goal wouldn't be to just see what I've left behind, but my goal would be to maybe one day feel and be proud of the fact of how many other Jawad Qureshis did I actually make. जवाब अभी आपने बोला कि आपका एक पाउंड जो है कनाडा में है, लंदन में है, कराची में है, लाहौर में. Being a CEO, being an entrepreneur, do you justify the work-life balance? You have family in Canada, you have physically business in Pakistan. How do you justify? This is one of the hardest questions. अभी आपने खुद बोला balanced lifestyle. ये खुला तज़ाद है. This is the hardest question. This is the hardest question because it depends who's listening to it. अच्छा जी, बैलेंस ऐसा है कि ये बात सच्ची है. समटाइम्स आपको पता होता है कि आप जो जानते हैं और दूसरों को बताते हैं वो सही है, तो शायद उस पर आप खुद कभी अमल नहीं कर रहे होते, और खुद कभी अमल कुछ हद तक कर भी रहे होते, लेकिन कुछ हद तक किताबों में जो लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस जो है उसका रद्दो बदल कोई नहीं है. तो it's a very tough thing, and I must say it's a very tough thing to do, but you cannot do this forever. Life brings you through certain pockets, certain phases. It's a very tough thing to do. Now, for somebody who's entrepreneurial, the world is open to them, because they don't just look at one society. They look at, multiple origins, basically. And I always wanted to do something which was very global. My inspiration always was to do something in a global way, solve a global problem. And I think, as much as I would like to not say it, I think I'm still somewhat balanced myself. I think I love to work. I'm crazy working. I think I put in 14, 16 hours of work every day. It has limitized many things. I mean, fitness is one thing. Social circle sometimes is the other thing. I don't get much of a time to switch off sometimes. But then again, there are certain phases in life. और उन phases के अंदर Allah Ta'ala gives you the opportunity to do something, provided आपकी intention साफ है और आप
एथिकल तरीके से चीज़ों को डिलीवर करते हैं ऑन अ पर्सनल ट्रांजैक्शनल बेसिस, कि आप किसी को अगर कोई चीज़ सोसाइटी में दे रहे हैं या बेच रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट ऑलवेज हैज़ टू बी वेरी. तो आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग I'm quite balanced. I think the only my kids, my family perhaps is something that I stay deprived of, which is not a good thing. But inshallah, I think I'll work on that actually. Sir, again यही क्वेश्चन के साथ ही दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है कि आपने खुद ही बोला कि 16-15 hours you work, जी, ठीक है, और काम कर रहे हैं, वर्क जो है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है जो it creates stress. जी. Stress is effect of life, especially business stress. जी. What are the coping strategies of Jawad Qureshi's business stress handling? हाँ, I think एक अपने आप को एक बात, हमारे ना एक जो स्कूलों में छोटे लेवल पे उस्ताद होते थे, हम गलती करते थे कोई, तो कहते थे अच्छा ये चीज़ को 1000 दफ़ा लिखो, तो वो आपकी एक चीज़ मेमोरी में चली जाती है. आप अपने आप से ये कहें कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अपने आप को ये बताते रहें. ये सबसे सिंपल थेरेपी है. आपका ब्रेन अकस्टम्ड हो जाएगा इस चीज़ के ऊपर कि यू डोंट वांट टू गेट, अगर कोई कहता है किसने गलत पार कर दिया, कोई कॉर्पोरेट डिसीजन आपके किसी पार्टनर ने या डायरेक्टर ने गलत ले लिया, यू शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट, यू शुड कोप विद इट. द रेजिलिएंट पीपल इन लाइफ आर दोज दैट स्माइल at the hardship, because एक सेकंड के लिए वो हार्डशिप नजर आती है, और वो पहला ही सेकंड सबसे ज्यादा आपको बॉदर करता है, और यकीन माने कि वो टाइम भी आता है और बड़ा जल्दी आ जाता है कि वही हार्डशिप पीछे चली गई होती है, राइट? तो आप उसको देख के हंस रहे होते हैं. ये सिर्फ एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर एटीट्यूड को आप ट्यून कर सकते हैं, एटीट्यूड को आप अपने आप को ट्यून कर सकते हैं, आप अपने आप को 1000 दफ़ा बता सकते हैं कि जी मुझे गुस्सा नहीं आएगा, और यकीन माने जब आप 999 पे पहुंचेंगे तो आप मेरी बात याद रखेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आएगा. मतलब ये कि आप सुबह शाम ये तवीज़ पढ़े कि आज मेरा गुस्सा करने का कोई मूड नहीं, आप इसको पढ़ें और इवेंचुअली अपनी बॉडी लैंग्वेज में एक चेंज देखेंगे, क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है, आपने इस पर बिलीव किया. ठीक है. ब्लड प्रेशर मैंने बात की, आप देखें एक हार्ड वर्किंग जो 15-16 घंटे काम करे, ऑफ कोर्स आपको अपनी स्लीप भी चाहिए एक्चुअली, राइट? तो इफ यू डोंट लुक आफ्टर योरसेल्फ जस्ट बिकॉज एग्रीवेशन, यहाँ पे तो आपके सामने कोई गाड़ी गलत ला के खड़ी कर दे तो मैंने देखा लोग गुस्से पे आ जाते हैं, या आपको कट कर जाए, अनएक्सपेक्टेड टाइम के ऊपर लाइट चली जाए, लोगों को गुस्सा आ जाता है एक्चुअली यार. तो these are small things which you should just realize that you are stronger than anything else, and you realize it's not worth गुस्सा करने का, इट्स नॉट वर्थ एक्चुअली. सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं जवाद कुरैशी जी? सक्सेस जी, योर ओन वर्ड्स, योर ओन, मेरे ख्याल में कि माइलस्टोन्स रखने पड़ते हैं जी, और उन माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए एक राह है. हाँ, एक राह है, उस राह का नाम सक्सेस है. ठीक है. आप उस राह पे चलते हैं और कदम ब कदम आपको अपनी पहली मंजिल नजर आती है, उसके बाद आप अपनी दूसरी मंजिल पे चलते हैं. तो आप जब मंजिल पे नहीं पहुंचते तो आप सक्सेसफुल नहीं. लेकिन ये सारी चीजें आप बिन बताए, बिन प्लान किए, बिन मशवरा लिए, मशवरे में बड़ी बरकत है, आप नहीं चल सकते, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. फॉरवर्ड मार्च करना सक्सेस की निशानी है. जी. अपनी मंजिल की तरफ. जी. हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करते हैं?
your idea of happiness. जी, I think happiness एक वैक्यूम है, ठीक है, खला है। वो एक ऐसी चीज है कि उसमें आप फ्लोट करते हैं और वो हर कोई करना चाहता है, और आपको हैप्पीनेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिल सकती है। कुछ लोगों को दीन में हैप्पीनेस मिलती है, कुछ लोगों को अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर हैप्पीनेस मिलती है, कुछ लोगों को बुरे काम करने से हैप्पीनेस मिलती है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हैप्पीनेस इज यूजुअली शॉर्ट लिव्ड हर सोसाइटी के अंदर। व्हाट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन इज दैट you need to become the happiest nation on the planet. ये मेरी बड़ी तलब होगी कि we become as Pakistanis as the happiest nation on the planet actually. उसके लिए it starts from people themselves. उसके लिए it starts from your actions one to the other, and then both of you to society basically. And I think happiness is a small word. It must be made a much bigger word. And I think over the course of time, there will be more happy people than sad people. I don't think you would want to associate yourself in a किसी भी मोहल्ले के अंदर sad लोग नहीं होने चाहिए, उसके अंदर happy लोग होने चाहिए actually. किताबें भी आपने बोला कि अपॉर्चुनिटी में तो 1000 किताबें पढ़, हमें तो 3 किताबें ऐसी बताएं जो रियली ट्रांसफॉर्म क्रिएटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। रिकमेंड अदर्स टू रीड मस्ट, पढ़ने से पहले पढ़ के जरूर पढ़ें। एक तो जी आपकी किताब ठीक है, 100 CEOs of Pakistan। एक तो जी आपकी किताब है। इसमें माशाल्लाह आपकी काविशों से आपने बहुत अच्छे लोगों के नाम इकट्ठे किए। मैंने एक्चुअली आपकी हर किताब पढ़ी ज़रूर है, और उसमें से मेरे कुछ बड़े इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं बेसिक। आई मीन उसमें तो एक किताब मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, बड़ी छोटी सी किताब है, इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ वॉर। हाँ, तो द आर्ट ऑफ वॉर जो है ना, आई थिंक इट शुड बी मेड एज अ सिलेबस in at least grade 11 and grade 12 के जो students होते हैं OA levels कर रहे हैं, they must read this actually. It should be made part. It's amazing, and I think if it's come to a point they should understand it more than memorize it actually. pretty छोटी सी किताब है, but it has a huge diversification of understanding and meaning. मैंने खैर उसको जिंदगी में बड़ी लेट पढ़ा actually, लेकिन वो किताब मेरे साथ हर जगह पे होती है, और जब भी मुझे किसी मसले का, you can always go back to remembering pages as to what this person was saying and what this mindset was saying. तीसरी किताब में I think जब आप कुरान करीम मतलब के साथ पढ़ते हैं और फिर हिकमत और दानाई उसके अंदर से अखज़ करते हैं बेसिकली, तो उससे ज़्यादा समझ जो है वो आपको कोई किताब नहीं दे सकती। ये मेरी ऑल टाइम, आपकी भी जी इसमें। एक विजन के बारे से आपने बोला, एम्पावरमेंट की आपने इतनी 3D में रखा है, उसके बारे में आपकी क्या टेक है? और विजन डेवलपमेंट, विजन एम्पावरमेंट, leadership development, especially at the workplaces, and the next future is all about femininity and the women. What is your take, and what is your organization's having the proportion of the women in the workplace? देखिए जी, I'll say something here. At 3D Lifestyle, we have 90 employees, 90, and these are in the span of the last 6 months. I think I'm 100 cross कर गया, लेकिन जो हमारा last पेरोल था उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं, and out of those 90 employees, 85% of them are females.
and they're either doctors or they're physical therapists or they're, and they're very educated people. I've chosen to have some of the best knowledgeable people actually. Working with them, I've just realized that women play a very essential role in society, right from, bearing a child inside them all the way up to being a good sister, and then of course in your lifetime, being an amazing wife. The bond that a woman can keep is something I think men take for granted in our society actually. The relationship that you can have with a mother or a wife or a sister is indispensable. Okay. Now, females, जब मैंने देखा especially KKT में और aesthetics के अंदर, मैंने देखा यार मर्द अपने ऊपर पैसा खर्च करता है ज़्यादा, अपनी औरत पे इतना पैसा नहीं खर्चता actually. And I hate to say it the way I just did. This might not be true for everything else, but when I went to the grassroots of it, I realized that this is a very true thing. And this is a complete disbalance in how society needs to operate actually. Right? So there should be equality in the household mindset first. A woman becomes a very powerful thing in society when I believe she has been given equal rights in her own house. And once that happens, you will see females coming out and making a huge difference in the corporate world. They'll be more dedicated because they have the care element inside them. They'll be more concerned. को फिक्र से जिस तरह हम कोशिश करके नमाज खुशी और खुजू से पढ़ते हैं, उस तरह से हम, मेरे ख्याल में हमारी जो माएँ बहनें हैं वो बड़े खुशी और खुजू से चीज़ों को कर रही होती हैं. And I think empowerment ये नहीं है कि जी पावर उठा के और वुमन को दे. That's not what I mean by empowerment. That can be fatal actually. Doing that can be very fatal. However, you balance it. There shouldn't be you shouldn't be lopsided basically. Okay? आप पाकिस्तान में लाहौर में या कराची में तो चलो फिर भी कुछ हद तक, आप दूसरे शहरों में चले जाएं, इवन फैसलाबाद, मुल्तान, आपको उस लेवल पे फीमेल्स इंटरैक्टिव करती हुई नजर नहीं आएंगी एक्चुअली. इट्स अ वेरी रिजर्व, ऊपर लिड डाली हुई सोसाइटी है बेसिकली. So I think, in their own Islamic ways, in their own, our females should be empowered to do what it takes and bring a change in the culture, in society. मैंने culture इसलिए कहा क्योंकि a lot of our culture today is not our true Islamic culture basically. Okay, Islamic understandings are much different. हमने कुछ चीज़ें मुख्तलिफ कल्चर से इस सब कॉन्टिनेंट की अडॉप्ट करके आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं. So anyways, I'm a big advocate. I think what we need to do is have more female-oriented groups, basically, and then, have a facilitation. जिस तरह आपके पास ये management house आपने facilitate किया. This is the best place, I believe, to groom, professional development in females, to groom, and get and provide human capital to many organizations, because you're able to either bring courses or you're able to provide certifications and trainings, and you're able to do what it takes to empower females. Second last question. जवाब, हर आदमी जो बड़ा बनता है, CEO जो सक्सेसफुल होता है, उसके कुछ fears भी होते हैं, कुछ उसके regrets भी होते हैं. जी. क्योंकि without regrets कोई इतनी कामयाबी की कुछ प्राइस भी पे करनी पड़ती है. जी. तो क्या आपने प्राइस पे की? क्या fears, regrets if any? जी. I think
the future landscape of our country needs to be very stable. ये कुछ fears हैं मेरे कि आप अच्छा करना चाहते हैं, करने का सोचते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, और कोई आके आपको रोक दे और वो सिर्फ इधर किसी पर्सनल गेन के लिए एक अच्छे इदारे को या एक अच्छे ग्रुप ऑफ लोगों को वो आई थिंक सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, आई थिंक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी, आई थिंक सोसाइटी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आई पर्सनली बिलीव कि एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज़ इट्स फियर, और चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं उस साइड के ऊपर. तो आई थिंक मी और सम ऑफ आवर कंपनीज that I'm part of are very in tune to go with the flow and adapt. We believe in adaptation, Darwin's theory of adaptation actually. The fear पे जी regrets मेरी कुछ ऐसी हैं कि I think, and I'll say this, we should never compromise on, always get the best people. Otherwise, it slows you down. Otherwise, it wastes your time. It's always, I know they cost more. पाकिस्तान में एक कल्चर है, अपने मैनेजर्स को मैं यही कहता होता हूँ, good people come at a significant cost, but they are able to do and provide you with someone as good as 3 people. Right? So what you're trying to save is not worth it. So in short, I've sometimes not been the best person to regretfully been able to hire the best people. In some cases I got extremely lucky, but I think this message goes for those listening to me that are grooming themselves to make sure they explore themselves, find out more about themselves, अपने आप को पहचाने, अपने आप को बेहतर करें. And those that are in my shoes that are wanting to do startups and they're wanting to run a small to medium-sized enterprise or even larger enterprise, they have the luxury of hiring to karni hai aapne, so might as well hire the best people, the best talent actually. And please look around. The best investment that I do is my interview. When I interview somebody, वो मेरा सबसे important टाइम होता है, उसमें मैं बहुत टाइम लगाता हूँ. So we want to make sure we always hire the best people actually. इसी किस्म की आप आपसे पूछी कोई ऐसी मूवी आपको कि आपको लगता है कि मूवीज के लिए जी, तो वो भी मूवीज बनाएं जो रियली ट्रांसफॉर्मेटिव हो, रियली मोटिवेशनल हो, जो आप समझते हैं कि वॉच इस स्टाफ को हमने साइन अप बनाया, हम मूवी ऑफ द वीक करते हैं. अच्छा, तो रिकमेंडेशन पे कि आप आते हैं अपने नस्ल को दिखाएं ऐसा केस स्टडी के फॉर हाउ आपको कोई ऐसी दिल के पास है तो कोई मूवीज. देखें, मैं मूवीज़ देखता था, बड़ी कम मूवीज़ देखी हैं एक्चुअली. मैंने मस्ट से कि मैंने कोई ज़्यादा मूवीज़ मैंने देखी नहीं है, लेकिन आई लाइक मोर I like more of business oriented movies, or I like more movies that have to do with Wall Street actually, right? Mera passion tha, I've worked in the financial markets for a while, so and how and how in reality sometimes when you see such a movie कि यार आप सोचते हैं कि यार वाकई ही ऐसा होता है, और आपको पता चलता है कि नहीं यार ये एक एक्चुअल स्टोरी थी बेसिकली. So I think those kind of movies really impress me a lot.
तो ऐसी कुछ अब ये 2008 में जो फाइनेंशियल क्रंच आया था उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी, तो मुझे उस तरह की मूवीज पसंद है जी। Any message of hope for young people, for young leaders, for young CEOs? जी, I think you should start from asking yourself, where do you see yourself in 5 years? Don't do anything. Zero. First question you need to ask yourself is, where do you see yourself in 5 years? And from there, you draw a roadmap, which is how do you get there? And then all of a sudden, ये 2 सवालों के जवाब के बाद आपकी वो पोजीशन होगी जिसमें पहली दफ़ा जो बीज बोया आपने वो ज़मीन से निकलना शुरू हो जाए। अब उस वक़्त नहीं भूलना आपने कि मैंने इसको किसी तरह से सनलाइट भी प्रोवाइड करनी है, मैंने इसको पानी भी देना है, मैंने इसको रोज़ जाके देखना भी है। उसका मतलब यह है कि आप इसको नर्चर करेंगे, अपनी टीम को आप नर्चर करेंगे, अपने आइडिया को आप मैच्योर करेंगे, आप अपना कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो ये कुछ ऑफ शूट्स हैं, लेकिन सबसे पहला ये है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। थैंक यू वेरी मच जवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? मैं आज क्वेश्चन की रोजा लेकर आप लोगों को आई जी आप एक थोड़ी सी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा हाँ जी, जो क्वेश्चन, हाँ बोलिए। अब बैठे बैठ जी, ये इनको दे दें। So my question is, food and exercise play equal role to stay healthy. Okay, if yes, then what new exercises we adopt to stay healthy, or it's if we are ranking in 100, so what is 40 and who is 60? Yeah. Food is 40 or exercise is 60? What? Food is 60 जी. Food is 60. जी. And exercise is probably 40 in my point of view. Okay. Certain food buffs or diet conscious people, they might not agree with it. लेकिन मेरे opinion के मुताबिक you can probably survive without exercise, okay, for a little while. You'll have to move, okay, but you might not survive without food. Now, when it comes to your overall appearance and how you are going to be thinking mentally, आपकी सोच जो है ना वो ओवर पावर हर चीज़ पे कर, आपका सोचने का जो आप सोचते कैसे हैं, आपका नजरिया सोच क्या है, बेसिक वो आपके लिए फिटनेस और एक्सरसाइज इज ऑप्टिमल बेसिक। So what you need to do is balance that out. And yes, 60% of it is definitely diet, and I think 40% of it is your fitness exercise. What is healthy food? It's a raw vegetable. It's different for all. Yeah, I think you need a balanced diet of carbs, proteins, fats. बहुत सारे diet plans भी हैं। कुछ पे लोग डटे रहते हैं, कुछ पे लोग डट के हिल जाते हैं, राइट? तो उसकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। आई थिंक यू कैन ऑलवेज चूज समथिंग। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, आई कैन जस्ट गिव यू एन ओवरऑल व्यू फ्रॉम द सेक ऑफ हाउ आई रन आवर कंपनी। एक्चुअली आई थिंक you should have a balance of proteins, carbs, and then fats actually, and then always know अगर कुछ भी चेंज लानी ना आपने अंदर, कुछ भी चेंज लानी है, ऑलवेज नो योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट आज आपके अंदर इतनी फैट कंटेंट है, इतना बॉडी मास इंडेक्स है आपका, कुछ करने से पहले ताकि आप अपनी चेंज को मेजर कर सकें।